Okay, so there are two types of errors. Errors that does not affect trial balance. Okay. Errors that create a difference in trial balance. That means amount of debit is not equal to the amount of credit. Okay. Now this video is only helpful if you review it after my previous uploaded videos. If you look through this, through those, and then you look at this will help you a lot. Rather than if you're going to look at individually, मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि those who have not attended and are looking for this video, you should look at previous videos and then look at this one. Okay. So errors not affecting trial balance में you have error of principal omission, commission, original entry, reversal, and transposition. ठीक है. In errors में no suspense account will be open. No suspense account okay. Because they are not creating any difference in trial balance, you don't need to open suspense account. Okay. Just by the mean of journal entry, you will correct them. Okay. And this is the one, the second one. The second one is basically that creates a difference in trial balance. ठीक है जी. तो suspense account is open on the weaker side. You'll open suspense account on the weaker side. If the debit side is weak, you'll open it over there. If the credit side is weak, you'll open it over there. ठीक है जी. All right. So moving on. Uh, things you should know. Number one, journal entries, also known as original entries. अगर आपको डबल एंट्रीज नहीं आती हैं, आप इनिशियली ओरिजिनल एंट्री नहीं बना सकते, तो ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सॉल्व सस्पेंस का, जिसमें आप पर्टिकुलरली सेल्स साइकिल एंड परचेज साइकिल आप देखें. सेल्स साइकिल में आपको कौन कौन सी एंट्री मिलेंगी? नंबर वन, goods sold on credit. Sales return, discount allowed, bad debt, and number 5 is receipts from customers. Okay. These are the journal entries that you should know from the sales cycle. इनकी ओरिजिनल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए. परचेज साइकिल में goods bought on credit. Number 2, purchase return, discount received, and payment to supplier. Okay. Apart from these, what other journal entries should be known? Other entries that you should know would be
one payment for expense. It could be wages, electricity, heating and lighting. Entry is going to be expense debit, cash credit. Number two, purchase of non-current asset, which is non-current asset debit, cash or bank credit. जनरली ये जो दो एंट्रीज हैं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल में काम आती है. कैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल में काम आती है कि जनरली वो कहता है कि जी मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट. तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग एन एक्सपेंस आपने एसेट को डेबिट कर दिया होता है. आज आप एसेट को क्रेडिट करके खत्म करते हैं, ठीक है, और एक्सपेंस को डेबिट करके रिवाइव करते हैं. दैट्स द करेक्ट एग्जांपल. वाइस वर्सा केस में purchase of fixtures is debited to fixtures maintenance account. Fixture maintenance is an expense, fixtures a non-current asset. So instead of recording a non-current asset, आपने उसको expense account में रिकॉर्ड कर दिया. तो आज expense को क्रेडिट करके खत्म करेंगे और आप fixtures को डेबिट करके रिवाइव करेंगे. जी इरज. सॉरी इरज, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी. Yeah, so I was saying it's because you changed the accounting head, right? You changed Yes. like the principle. बिल्कुल ठीक है. तो ये अदर एंट्रीज में आपको ये दो एंट्रीज पता होनी चाहिए ताकि इसमें आप एरर प्रिंसिपल को एडजस्ट कर सकें. ठीक है जी. नंबर 3, ड्राइंग्स. ठीक है, ड्राइंग्स में दो तरह की एंट्रीज होती हैं. अगर ड्राइंग्स बाय गुड्स हैं या ड्राइंग्स ऑफ कैश है और बैंक. अगर गुड्स विड्रॉ हुए हैं तो एंट्री होगी ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट. अगर कैश या बैंक से विड्रॉ हुआ है तो ड्राइंग्स डेबिट, बैंक और कैश क्रेडिट. कैपिटल डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज. ठीक है, तो ये एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए. सही है. नाउ मूविंग ऑन, let's look at some examples. Okay, and I am doing example, a mixed set of question for both error affecting and non affecting trial balance. ठीक है जी. Before that, any question? No, sir. लो यार, कोई बात नहीं. Okay. Number 1. Total of wages column $2456 was posted in trial balance as 2546. ठीक है. अब ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि वेजेस कॉलम में जो 2456 था, you posted it as 2546. ठीक है. Now wages appears in the debit side of a trial balance. तो डेबिट साइड पे कितना आना चाहिए था? 2456 आ गया, but instead you recorded 2546. तो आपने कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? 90 से. इसका मतलब ये है कि आपने जब डेबिट साइड को इंक्रीज कर दिया तो सस्पेंस ओपन हुआ होगा ऑन द क्रेडिट साइड बाय 90.
बात समझ में आ रही है? Wages comes on the debit side of a trial balance, and wages are 2456. But by mistake you debited wages by 2546. That means आपने debit side को increase कर दिया 90. तो suspense account open हो गया on the credit side by 90. ठीक है. आज आपकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? आप वेजेस को कम करेंगे. वेजेस को कम करेंगे तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? हाँ जी. Sir, credit. Wait, no, debit. वेजेस तो डेबिट हुई. वेजेस डेबिट होनी चाहिए थी बाय 2456, लेकिन आपने डेबिट कर दी बाय 2546. You increase the debit side on the wages account, right? By 90. आज जब आप करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? वेजेस को क्रेडिट करेंगे 90 से. और सस्पेंस अकाउंट जो ओपन हुआ था क्रेडिट साइड पे, आज आप सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे ऑन द डेबिट साइड. दिस इज क्लोजिंग. करेक्टिंग एंट्री में हमेशा सस्पेंस अकाउंट को आप क्लोज करते हैं. रॉन्ग एंट्री में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट ओपन का हुआ होगा. रॉन्ग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्लोज होता है. अब इसी तरह टोटलिंग वाली एंट्री कुड बी फॉर वेजेस, कुड बी फॉर सेल्स. तो फर्स्ट यू नीड टू सी कि जी ये आइटम ट्रायल बैलेंस में अपीयर का होता है. सबसे पहले आपने देखा कि वेजेस अपीयर होता है डेबिट साइड में. दैट्स स्टेप वन. नंबर वन, वेयर इन ट्रायल बैलेंस. नंबर टू, आपने देखा मतलब इसमें डेबिट और क्रेडिट. तो आपने कहा कि जी ये ओवर स्टेट हुआ या फिर अंडर स्टेट हुआ. दैट्स द सेकंड स्टेप. इस क्वेश्चन में ओवर स्टेट हुआ था. अगर 3A में ओवर स्टेट हुआ तो आप ऑपोजिट एंट्री करेंगे ताकि इसको खत्म करें. और अगर अंडर स्टेट हुआ तो सेम साइड एंट्री करके इसको बराबर करेंगे टू द ओरिजिनल अमाउंट. बात समझ में आ रही है? Guys, it is clear. Should I explain it once again? Sir, no, it's fine. Okay. हाँ जी, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? You'll see where does this thing appears on a trial balance, a debit and a credit. Then you'll see if it is over recorded or under recorded. Okay. If it is over recorded, you'll do the opposite entry to correct it. If it is under recorded, you'll do the same side entry to actually bring it to the original amount. सही है? जी सर सही है. All right. Let's look at number two. Check is number two is basically receipts from ATOL 400 has been credited to ATOL's account. Check receipt of from ATOL has been credited to BTOL's account. ठीक है जी. तो सबसे पहले original entry क्या होगी? Bank debit and ATOL credit. This is original entry. Wrong entry आपने क्या बनाई? बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा तो सही हुआ है. आपने BTOL को क्रेडिट कर दिया. ये है ना? Instead of crediting ATOL, आपने किसको क्रेडिट कर दिया? BTOL को क्रेडिट कर दिया. आज इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? Sir, bank would be same. BTOL डेबिट ताकि वो खत्म हो.
और 8 ऑल क्रेडिट ताकि वो रिस्टोर. दिस वाज एरर ऑफ कमीशन. ये होगी closing for beat all, and this is restoring entry for 8 all. So this is what you'll do. Okay. Any question in this one? Not yet. Right. The total of drawings 500 was missing from trial balance. Missing from trial balance, omitted from trial balance. ठीक है जी. Again वो मसला आ गया. सबसे पहले आप देखें ये ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में आता है डेबिट साइड पे और डेबिट साइड पे आता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया. जब रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा. किस साइड पे ओपन हुआ होगा? वीकर साइड पे. And because you never recorded drawings on the debit side, suspense account would have opened on the debit side, replacing drawings. आज इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? So सस्पेंस अकाउंट तो आपने डेबिट साइड पे ओपन करना था 500 पे, आप ड्राइंग्स क्रेडिट पे कर देंगे. बेटा सस्पेंस अकाउंट तो हो गया ओपन. Suspense account got opened due to error because you were supposed to debit drawings but you never did that, so it got replaced by suspense account as an error. Now when you are It was an error of omission, right? one side omission. Okay. So the correcting entry would be the original entry. Correcting entry would be कि आप drawings को record करेंगे, जो होना चाहिए था. Suspense account जो debit पे open हो गया था, आप suspense account को close करेंगे on the side. See, this is basically one side recording. आपने सिर्फ डेबिट करके क्रेडिट कुछ नहीं किया. जब आपने जो जगह एम्प्टी छोड़ी, that will be taken by suspense account as an error. और आज करेक्टिंग एंट्री में आप suspense account को eliminate करेंगे, खत्म करेंगे उसमें. ठीक है जी. Shall we move on to the next one? Any questions on this? No question. If you'll ask me to repeat, I can repeat it like 10 times. I have no issues with that. But if everything is clear, वो error of yes sir for now, but like the error of principle जो पहली वाली थी, अगर वो बाद में end में revise करवा दें तो okay, ठीक है. All right, number four. ये लो जी, error principle अभी ले आते हैं. Repairs to furniture, $450 incorrectly debited to furniture account. ठीक है जी. Repairs to furniture, this is an expense, and furniture, this is an asset. Incorrectly क्या हुआ? आपने डेबिट कर दिया furniture. Original entry would have been repairs debit and bank credit. आप normal expense की entry बनाते हैं. Wrong entry आपने क्या की? फर्नीचर को डेबिट किया और इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो बैंक सही रिकॉर्ड हुआ. What will be the correcting entry? इसका मतलब है this is an error principle. Error principle में क्या हुआ? आपने एक
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर, एक एक्सपेंस को एसेट रिकॉर्ड करके आप एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड, ठीक है जी। नाउ व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री फॉर दिस? क्या फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था? नहीं। क्या रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था? हाँ। तो आज आप करोगे क्या? रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए तो आज आप रिपेयर्स डेबिट करोगे, फर्नीचर को डेबिट नहीं होना चाहिए तो आज फर्नीचर को क्रेडिट करके उसको खत्म कर दो, ठीक है। एक इशू इसमें फिर समझ पे। क्या? Anyone else? Any other issues in this? Anyone who's facing issues in this? Repairs, debit, furniture credit? No? Also, Okay. Next. Okay. Number 5. Yeah. Payment to B Hall, $200. Supplier has been debited to bank account and credited B Hall account. Okay. Payment to supplier 200 has been debited to bank account and credited to B Hall's account. Original entry क्या होती है? It should be B Hall debit and bank credit. Why? Liability खत्म हुई when you pay your supplier, और asset भी decrease हुआ because you have paid it from the bank. But wrong entry क्या बनी? Wrong entry में आपने क्या किया? Bank debit, B Hall credit. कौन सा error है ये? so Reversal. Reversal हो गया ना? error of complete reversal. Yes, this is error of complete reversal. आज आप करेक्टिंग एंट्री में ओरिजिनल एंट्री ही बनाएंगे but with double amount. So entry is going to be B Hall debit 400 and bank credit 400. Why with the double amount? First amount to eliminate this and the second amount to restore the original values. That is why you make double amounts. ठीक है जी. Number 6. Total of discount received column $150 has been debited to discount allowed account. ठीक है जी. देखते हैं जनाब. Discount received is an income. Income comes on the credit side. लेकिन आपने इसको क्या किया? डेबिट कर दिया इसको. Which is wrong. कहाँ डेबिट किया? डिस्काउंट अलाउड. इसका मतलब ये है कि एक तो आपने क्रेडिट साइड को डेबिट कर दिया, सही है, और उससे क्या हुआ कि जी आपने दोनों साइड मतलब फॉर एग्जांपल
एक डेबिट एक क्रेडिट होना था, आपने दोनों डेबिट कर दिए। सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट से खुला होगा? डबल अमाउंट से, सिंगल अमाउंट से? ये इन डबल अमाउंट। डबल अमाउंट से। इन अ जर्नल एंट्री where there is one debit and one credit, आपने दोनों डेबिट कर दी, तो सस्पेंस अकाउंट डबल अमाउंट से खुला होगा ना। ओरिजिनली ये क्रेडिट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आपने डिस्काउंट अलाउट को डेबिट कर दिया। आज हम इसकी करेक्टिंग एंट्री डायरेक्टली बनाएंगे। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउट को खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? डेबिट हो चुका गलती से, आज क्या करोगे? इसको डिस्काउंट अलाउट को क्रेडिट करोगे ताकि खत्म हो। डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? सर आपने पहले ही डेबिट में मेंशन कर दिया था ना, तो आप क्रेडिट करेंगे। वो तो डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट रिसीव तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, आज रिकॉर्ड हो रहा है फर्स्ट टाइम। ओ अच्छा, वो फिर डेबिट में आएगा। तो बेटा ये करेक्ट हो रहा है, ये रीस्टोर हो रहा है। जब ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो अब डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा बाय 300। सर समझ में नहीं आया। ओके, डिस्काउंट रिसीव ओरिजिनली क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है। आज इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके रिस्टोर करेंगे। नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, तो आज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। जब आपके पास 2 क्रेडिट हो गए तो आपको डेबिट क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। ओके, इसके बाद समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहता हूं कि जनाब ओके, इन्हीं एरर्स पे देखेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर correcting the errors was 28,500, ठीक है। तो effect of error प्रॉफिट को या इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीज करेगा, एंड वील सी टू दैट। इस पे आपने टिक लगाना है, तो यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ठीक है। बात समझ में आया? हम देखेंगे what is the effect of each error on the profit. So number 1, let's go back to number 1. The total of wages column 2456 was posted in the trial balance as 2546, ठीक है। अच्छा जी, मुझे नीचे एक कॉलम और बना लेनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। ये भी बनाना चाहिए ना, ये भी तो हो सकता है। सर नो इफेक्ट भी हो सकता है। परफेक्ट, ठीक है। Now 1 2 3 and the last one is 6. इसके बाद I'll have my revised profit, ठीक है जी। तो let's look at number 1. Wages 2456, आपने 2546 रिकॉर्ड कर दी थी। इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया था ना,
by 90. आज जब इसको करेक्ट करोगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, मतलब इसमें आपका एक्सपेंस इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट इंक्रीज करोगे बाय 90। आज जब उस एरर को सही करोगे तो आप अपना एक्सपेंस कम कर रहे हो ना, वेजेस पे आप अपना एक्सपेंस कम कर रहे हो ना, एक्सपेंस कर रहे हो तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? यू ओवर रिकॉर्डेड योर एक्सपेंस, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया था। आज जब इसको करेक्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक्सपेंस को कम कर रहे हो और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो। नाउ लुक एट नंबर 2, इट इज एरर ऑफ कमीशन। आपने ए टॉल के बजाय बी टॉल को क्रेडिट कर दिया था। एरर ऑफ कमीशन एज ये है, एरर ऑफ कमीशन नो इफेक्ट। ठीक है जी। नंबर, अच्छा देखो, एरर ऑफ कमीशन था तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पे फर्क कर सकता है यहाँ। लेकिन इसको इसने प्रॉफिट पे इफेक्ट क्यों नहीं किया, अब जरा सोचो। देखो, द थिंग्स इन्वॉल्व वर लायबिलिटी, ठीक है, एंड एसेट, राइट? एसेट एंड लायबिलिटी वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। तो एसेट एंड लायबिलिटी वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, तो एसेट और लायबिलिटी तो इनकम स्टेटमेंट में आते ही नहीं है। एसेट एंड लायबिलिटी कम्स विद इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इनकम स्टेटमेंट में तो अफेक्ट होगा, अगर कोई इनकम या एक्सपेंस अफेक्ट हुआ होता तो उससे प्रॉफिट अफेक्ट होगा ना। बट थिंग्स दैट अपीयर ओवर हियर इन दिस एरर डज नॉट अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट, सो इसलिए वो नहीं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप बोले कि जी एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वुड आल्सो नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, नहीं, ऐसा नहीं है। Errors not affecting trial balance can sometimes affect मतलब प्रॉफिट, बिकॉज वो चीजें उसमें अगर इनकम स्टेटमेंट में की होंगी तो प्रॉफिट को बिल्कुल अफेक्ट करें। ठीक है जी। ना लुक एट नंबर, समझ में आया? शुड आई रिपीट दिस अगेन? That's clear, I think. नंबर 3, अगेन the things over here is drawings, जो कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं आते। अगर ये ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होती, परचेजेस वाले कोई मामला होते तो इनकम स्टेटमेंट में आते और प्रॉफिट पे अफेक्ट करते, लेकिन इससे सिंपल ड्राइंग्स थी। It was just drawings that does not come out in the trial balance, so it has no effect. No, does not come in income statement. इनकम स्टेटमेंट की चीजें आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी। नंबर 4 देखो, although this is error of principle, बट आपने या बट आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया था एक एसेट। आज जब आप एक्सपेंस को वापस इंक्रीज करोगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो एज अ करेक्शन, तो एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 450। आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा बाय 450। व्हाई? इफ यू कुड सी दिस, आपने रिपेयर्स को एसेट रिकॉर्ड कर दिया था, आज आप एसेट को कम कर रहे हो और एक्सपेंस को वापस से रिस्टोर कर रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग एसेट एक्सपेंस अगेन। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, दैट मींस एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट विल डिक्रीज। ठीक है। ऑलराइट, नंबर 5, payment to B Hall, again a liability and bank involved, does not come in income statement, so no effect. And lastly, discount received is an income.
आपने उसको डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में, विच इज एन एक्सपेंस. आज जब आप एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हो और इनकम इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट, जब आप एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हो और इनकम इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना. Yes. You say by 150. By 300. So why Expense 300? decrease. Expense decrease by 150, profit increase by 150. Income increase by 150, profit increase by 150. The overall effect is, Oh, it's double. अच्छा सही है, समझ गया. ठीक है. So what will be your revised profit? सर 28,500 में आपने 90 ऐड किया, 450 निकाला और 300 60 वापस minus ऐड किया. किया. So, This is your revised profit. yeah. ठीक है. आया समझ में? Yes, sir. Okay. Now what you have to do is, okay, you will be watching the first videos of errors in suspense account. Okay. Some worksheets that I've given you. Practice that and look at this last video as well for the clarity upon this. Okay. Okay.